Hello students, as we are done with the phase 1 of transportation problems, here I am starting with the phase 2, that is optimality test. And for the optimality test, the first method is stepping stone method. So this is the question. This question has been solved, that is phase 1 of this question has been solved with the northwest corner method, and the answer is 3624. I have used northwest corner method only because to increase the steps for your practice. Otherwise, ideally we should use the WAM method for the phase 1, right? Okay. So let's start with the phase 2, that is optimality test. Stepping stone method के लिए हमें पहले इन cells के बारे में पता होना ज़रूरी है. See, जिन cells में allocation हुई है, that is WA, XA, XB, then YB and YC. These cells are known as allocated cells, occupied cells or stone cells. Similarly, these cells, which are the empty cells, these are known as empty cells, unoccupied cells, unallocated cells or water cells. What we are supposed to do, we need to transfer these allocations, one of these allocations to some other cell, that is the empty cell, so that the total cost gets reduced. Okay. सो किस में ट्रांसफ़र करना है ये हमें पता नहीं. ये चेक करने के लिए हमें इनके लूप्स बनाने पड़ेंगे. व्हाट आर लूप्स? हमने जिन वाटर सेल्स हैं, इन वाटर सेल्स में चेक करना है कि किस वाटर सेल में हमें कौन सी एलोकेशन ट्रांसफ़र करनी चाहिए सो दैट दिस 3624 गेट्स रिड्यूस्ड. इसके लिए हमने क्लोज लूप्स बनाने हैं. ओके, लूप्स कैसे बनते हैं? जिस वाटर सेल से का लूप बनाना है अपने, सपोजिंग WB, राइट? हमने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहीं पे वापस आना है. वी नीड टू मेक द शॉर्टेस्ट क्लोज लूप. क्लोज लूप आपका स्क्वायर भी हो सकता है, क्लोज लूप आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है, intermingled भी हो सकता है. The only logic is you need to start from here and you need to come back to this cell only. But when you start from here and you take a turn, at the turning point there must be some allocation. If there is no allocation at the turning point, then of course you cannot turn from there. For example, इसका loop कैसे बनेगा? I'm starting from here. It is of no value that you start from whether you make the allocations or you make the loop clockwise or anti-clockwise. It is immaterial. कैसे भी हम कर सकते हैं. यहाँ से start कर रहे हैं. So if I go this side, this is the allocation. So it means I can take a turn. Then I come down. Again there is an allocation. I can take a turn. Here again there is an allocation, I can take a turn and I can come back. So this becomes the shortest closed loop for this WB cell. So of course यहाँ पे हमने allocation transfer करनी है. So automatically 8 plus, because the allocation is to be transferred, we need to add something. So the value is plus minus 4 plus 16 minus 24. Okay, the logic is if something is to be added here, automatically it has to be reduced from here, then only the total will be 56. Similarly, if I am reducing something from here, automatically it will be added here, then only the total will be 72, and so on. So alternatively, plus minus plus minus. We make the loops for the allocations and we calculate the improvement index for the cost. So this comes out to be minus 4. Next water cell is WC. Let's make the loop for this. We start from here, again clockwise, anti-clockwise, whatever you wish. Let us go this side. I cannot take a turn from here because there is no allocation, so I am straight away jumping to this. Then I come here, then I have to come here. I cannot go here because I won't get a turn. So, but of course I have to come down, then this and then this. I'm repeating this to this, to this, to this, this and this. Then I take a turn and come here.
So again, plus minus alternatively. 8 minus 4 plus 16 minus 24 plus 16 minus 24. It comes out to be minus 12. सिर्फ और सिर्फ जिन सेल्स को अकाउंट फॉर किया है, कॉर्नर पॉइंट्स, सिर्फ उन्हीं की वैल्यूज़ पिक की हैं, बीच में इस 8 और इस 16 को इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज दीज आर नॉट लाइंग ऑन द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द लूप. Okay, now come to xc. Now let's make the loop for this. You can see this is the shortest loop. 16 minus 24 minus 16 plus 24. Because यहाँ से यहाँ गए टर्न है, यहाँ आए टर्न है, यहाँ आए टर्न है. So this is the shortest loop. 16 minus 24 plus 16 minus 24. आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी मूव कर सकते हैं. द वैल्यू कम्स आउट टू बी -16. लास्ट इज YA. So the loop for this is this, this, this and back. 8 minus 16 plus 24 minus 16. The value is 0. So for this method, you need to practice the formulations of loops. Otherwise, this is a very simple method. So we get the values as -4, -12, -16, 0. We need to choose the highest negative improvement. Highest negative improvement is this, mathematically the smallest number. So finally we'll formulate the loop only for xc, because this is the cell where the allocation will get transferred. यहाँ पे ट्रांसफ़र करने से मैक्सिमम बेनिफिट होगा हमें. तो इसका लूप ऐसे बनेगा, राइट. जिस सेल में ट्रांसफ़र करनी है ऑब्वियसली वहाँ प्लस, ऑल्टरनेटिवली माइनस, प्लस माइनस. यह हम ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हम पूरा कर सकें. यहाँ पे प्लस करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, तभी 82 आएगा. हम कॉस्ट तो चेंज नहीं कर सकते. व्हाट वी आर गोइंग टू चेंज द एलोकेशंस, राइट. सो this is the first step. For the next step, I'll make a separate video.